Good morning, sir. Good morning, Dr. Saab. How are you? I am fine, sir. And you? I am also very great. Okay, so Dr. Saab, first of all, many congratulations for your wonderful achievement. And you have gone viral. I have seen in every newspaper, in every news channel, it is Dr. Amresh Baboo Yadav. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And all the Okay, credit goes to you, sir. that's really, thank you so much for this compliment. And it's really wonderful achievement of your life that you have put a lot of sleepless nights together, lot of hard work behind this. Yes, sir. So I would like to ask you to give a brief introduction so that people will be able to connect with you, that from what background you have come, from what base level, root level you have made a progress. I am Dr. Amresh Baboo Yadav from Firozabad. I have done my schooling and in 2000, 1994 and graduation in 1999, post graduation in 2010, UGC NET in 2014 and PhD in 2010. My family background is not very good. I belong to a middle class family. My father is a farmer and my mother is a housemaker. And I am highly interested in playing cricket and reading new books. And I had a passion to be an assistant professor from the very beginning. अभी भी आप क्रिकेट खेलते हैं इस एज में भी? Yes, sir. Sometimes. Okay, great. Okay. So what are the challenges that you faced? शुरू से जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की तब से लेके कितने सारे चैलेंज आए और कभी आपको ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया? Yes, sir. So say he जैसे when I entered in the graduation classes, I was highly motivated to see my inspiring teacher, Dr. S.P. Singh, and I decided then one day I am to be an assistant professor. So this was my ambition, and when people came to know about my ambition, they began to mock at me and they began to laugh at me, and they generally call me professor when I was not a professor. And when some female relatives also came to know about my ambition, they began to call my mother, ironically, professor's mother. That was an indirect satire, and it struck my mind. And I then my ambition got grew up stronger and stronger when they began to criticize even my mother by calling professor's mother. Then I firmly decided I am to be an assistant professor one day, anyhow, any day. And after after completing post graduation and doctorate, when I got a job in intermediate college, my colleagues also began to mock at me. When I was twice defeated, three times I have been interviewed. Twice I was failed in the interview, and my colleagues uh, to see me began to say, "Lo, here is a professor is coming. Here is a professor is going." So that was and Really biting. indirect, yes, sir, indirect motivation to me. And now all the people and all all this kind of criticism has been stopped, and now I am very happy. And now my mother is no more, sir. So I am sad also. If she had been alive today, I think she would be very happy. You would be the best mother of the world, Yes, sir. definitely. I Yes, can. sir. I always sign myself as Amresh Indra. Indra is the name of my mother, and I consider it what am I today is the outcome of my mother's contribution and my mother's hard work and determination. Great. Thank you very much. It's really heart touching. कभी कभी जो ये सटायर होता है
इट इज काइंड ऑफ वेरी वेरी हाई मोटिवेशन। Yes, और sir. हमें उन लोगों का नाम चुन चुन के लिखना चाहिए जो इस तरह के लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। Yes, sir. एंड व्हेन यू गेट सक्सेस, आपको पर्सनली मैसेज करना चाहिए कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। Yes, sir. I always remember, sir, one thing. निंदक नियरे राखिए। यस, क्योंकि वेरी ये राइट, इस वेरी तरह के राइट। लोग हमको प्रेरित करते हैं और हमारे डिटर्मिनेशन को, एम्बिशन को बहुत मजबूत करते हैं। तो मैं उनको खराब नहीं मानता, और मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों की वजह से ही मैं आज इस स्थिति में आ पाया। ग्रेट, इस चीज को आपने काफी पॉजिटिवली लिया। यस एंड सर। उस चीज को आपने एक इग्निशन की तरह यूज किया। यस सर। यस, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। आपकी पढ़ाई जो आपने की, यू हैव डन योर पीएचडी, यू हैव क्वालिफाइड नेट, क्या क्या चैलेंजेस आए आपके लाइफ? सर, चैलेंजेस बहुत सारे आए। जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और तुरंत 2 साल के बाद मेरी जॉब लग गई 2005 में, टीजीटी के रूप में, पहले ही प्रयास में लग गई थी जॉब। तो जॉब में लाइफ बहुत अस्त व्यस्त हो गई और मैं अपनी पीएचडी को बहुत टाइम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मेरी पीएचडी डिले हुई और 2010 में अवार्ड हो पाई। और फिर पारिवारिक परिस्थितियाँ और डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ने इस तरीके से घेरा कि मेरा नेट भी 2014 में क्लियर हो पाया। और फिर अनलकी ये रहा, अनलक मेरे साथ ये रहा सर कि मतलब फर्स्ट प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन फेल हुआ, और दूसरे इंटरव्यू में मैं पहुंचा लेकिन मेरा वेटिंग लिस्ट में हुआ, और तीसरे प्रयास में आपके सहयोग से आज स्थिति सामने है सर। एमिली डिकिंसन की एक लाइन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यस सर। ओके, सो तीसरे अटेम्प्ट में जो आपको सक्सेस मिला, सो व्हाट वाज दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट योर रिजल्ट? सर आई वुड लाइक टू शेयर दोज मोमेंट्स। वो शाम का 8 बजे का जो टाइम था, सो कैन यू yes sir, yes एलैबोरेट sir. दैट मोमेंट? Yes sir, actually I was before the result I was tense, and I could not sleep well before one night, and that night the result was going to be declared. I was some depressed and not very. Although my score was good, but the results pressure was upon me. And then a student, uh, Dr. Amresh Yadav, he has been my student. He called me, "Sir, you are selected at the fourth rank in OBC." Then I saw the result. Yes, sir. So, so he was the first man, sir, that informed me. And after that, many calls and many phones came to me, and I attended all the phones till 12 p.m. Wow, And great. after 1 or 2 hour sleep, I again woke up, and I could not sleep. I was so happy. But then I revoked myself. सो जाओ, सो जाओ, otherwise your health इसके will पहले मैंने suffer. सुना था कि लोगों को स्ट्रेस और टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि खुशी की वजह से भी नींद नहीं आती Yes sir, yes sir. है। That's amazing, amazing. I would like to quote some lines from a poem called "Still I Rise" from Maya Angelou, where she writes that you may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I rise. But still, I dust like dust, I rise. तो आपका स्टोरी सुनने के बाद ये लाइन मुझे बार बार कहीं ना कहीं टच कर रही है कि आप Yes sir. एक रूट लेवल से यू हैव राइजन टू द Yes पोस्ट sir. ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, which is a class job, and you are going to be a game changer of this state as well as the country. Yes sir. I am the It's only really a one, proud son. moment for all of At us. this time, sir, I am the only man to be selected as an assistant professor in my own family and in my own maternal family and in my sasural also, sir. So Oh, great. डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। ये पूरा जो जनरेशन हमारा होता है ना, जनरेशन yes 1, sir. जनरेशन 2, 3, 4, इस पूरे जनरेशन में कोई एक ऐसा होता है जो ऐसा कुछ कर जाता है कि आगे Yes की sir. सारी पीढ़ियां सुधर जाती है। यू Yes आर sir. दैट वन। Yes sir. Thank you sir. Thank you sir.
So आपके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका लाइफ आपने बदल दिया बिल्कुल. Now Yes, you have sir. changed the generation. Yes, sir. My wife is also inspired, sir, to see me, and she is preparing for UPHESC Advertisement 51. Actually, she is net in Hindi and doing PhD. So she is highly motivated. And now, Wow, sir, now the greatest thing occurs in my life. My two kids, my daughter, who is 14-year-old and studying in 10th standard, and my son standing in 4th standard. Both children, sir, consider his papa the hero of his life. wow, great. So this is the So greatest thing, sir. if you are in the higher image, in the view, in the perspective of your Yes, sir. wife and children, that is the biggest achievement of a person in his life. यस सर, अक्सर कर लोग सर बच्चे दूसरे लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता Yes, हूँ या yes, मैं ऐसा बनना, yes. लेकिन मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ सर कि मेरे बच्चे मतलब अपने पापा में अपना आदर्श हीरो देख रहे हैं, और मैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं अर्जित की है, लेकिन मैंने संघर्ष के बाद की है, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे बच्चों को भी. अभी तो शुरुआत है. अभी तो यस शुरुआत सर, है. यस सर, यस सर. और सर मुझे बहुत You अच्छा have प्लेटफॉर्म मिल milestone गया to है. achieve. यस सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया सर आपकी कृपा से. एंड आई थिंक द कॉलेज विल बी अलॉटेड टू मी, आगरा कॉलेज, आगरा सर. That is the first choice, sir. And the Agra First college, choice. Agra, First choice. yes, sir. Agra college, Agra is the half university, sir. The college, Yes, yes. Absolutely. Absolutely. So you are also going to get a great platform. yes, College sir, of yes, Agra sir, Center. yes, sir, yes, sir. That's good. ये पहली बार मैंने सुना है कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए इतना सारा अप्रिशिएट करती है. अदरवाइज मैंने क्रिटिसाइज करते ही सुना है. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Okay, so really I grant salute to your wife. I mean, ma'am also. Thank you, sir. Pass me best wishes to her also, and also to your children, that they see an ideal person in you as a father. Sir, from the very day of the real, she is too much busy, sir, in her studies. And I have called him, now you are free. You do, or you, you are to fly in the sky now. Yes, sir. Yes, I have yes, completed that's my great. birth and now it is your turn. Yes, it's your rebirth now. Yes, sir. Okay. So now can you share your journey of first UPHSC written exam and then the interview? In the first UPHESC exam, advertisement number 46, actually I was not have much material, and I could place myself at the bottom. At that time, my score was 53 out of 100, and मतलब the कुछ last पता cut नहीं off. चल रहा था कि शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ से यस करें, सर, ज्यादा मुझे नहीं आइडिया पता, नहीं था. नहीं था सर. सिलेबस के अनुसार जितना मैं जानता था पेपर दे आया, और उसके हिसाब से फिर इंटरव्यू के लिए कॉल तो हुआ, लेकिन मुझे इसकी स्ट्रेटजी और इसका पूरी प्लानिंग नहीं पता था, इसीलिए मैं अपने पहले प्रयास में फेल हुआ. लेकिन दूसरे प्रयास में मैंने पूरी इसकी प्लानिंग से तैयारी की, लेकिन मेरे पास कोई टीचिंग या कोचिंग का मेरे पास कोई साधन नहीं था. उस समय इस तरह के जो आज की तारीख में कोचिंग हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं सर, अन्य टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं रिटन के एग्जाम की, लेकिन उस समय नहीं थी. लड़का कैंडिडेट को अपने आप ही तैयार करना पड़ता था, किताबें भी मार्केट में नहीं थी. तो उस या फिर समय आप ऑनलाइन ऑफलाइन करके जाओ, कहीं आप सेटल हो, फिर आप, बिकॉज क्योंकि सर, आप जॉब में थे तो आपके लिए पॉसिबल. हाँ मेरे इम्पॉसिबल था सर मेरे लिए वो सब करना. और मतलब ऑफलाइन भी सर नहीं था, कोई भी टीचर उस समय यूपीएचसी के सिलेबस को कोई टच नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना मटेरियल लोगों के पास था उसी से तैयारी कर रहे थे. तो मैं अपनी प्लानिंग में उस समय थोड़ा सा मैंने सिलेबस को पूरा समझा और मैं अच्छे स्कोर पर पहुंचा, लेकिन अनलकीली आई वॉज पुश्ड इनटू द वेटिंग लिस्ट, एंड द वेटिंग लिस्ट वॉज नॉट क्लियर. सर एट दैट टाइम आई वॉज हार्टली wounded to see the success passing from near me. I saw, I saw this journey. There is a bus, and all the selected candidates are in the bus, and I left out. I It feel was that. just like कि आप बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गए. Yes, sir. Yes, sir. फिर आपने डिसाइड किया कि छक्का ऐसा मारना है कि स्टेडियम पार कर जाए. Yes, sir. इस बार मेरा प्रयास ये था सर, मैंने ये प्रयास किया था कि 70 प्लस
में अपना स्कोर करूँगा और मुझे जनरल में सिलेक्शन लेना है, ये मैंने सोचा था। कोई बात नहीं है, और प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं, नए टैलेंट्स आते हैं, और चूंकि मैं जॉब में हूं तो उतना मैं टाइम नहीं दे पाया। फिर मैंने प्रैक्टिस क्लासें ली, एस के सर जो पढ़ाते हैं उनकी, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली, और फिर नतीजा सर आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो ओबीसी ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है उसका बहुत बड़ा ग्रेट रोल है आपको आगरा कॉलेज मिलने में। यस सर, यस सर, यस सर। पहले तो मुझे दुख था कि आई हैव बीन पुश्ड इनटू द ओबीसी कैटेगरी, बट नाउ आई एम हैप्पी because Agra College, Agra sir, I think you are also familiar. Yes, The yes, oldest institution, sir. It is absolutely. 200 years old, sir. It is older than the Agra University, sir. And Yes, yes. yes, sir. तो अभी जो आपकी जो इंटरव्यू की जर्नी रही, when you got about the result. Yes, sir. Sir, the journey of the interview of this time, all the credit goes to my honorable sir, you, Dr. Prem Shankar Pandey, and he showed me the way like Lord Krishna, and I did what Arjun had done in the battle of Yes. Kurukshetra. So the whole credit goes to you, sir, because you polished my life and polished my interview behavior and etiquettes and all these things. So I am very lucky I got connected in the interview. If I had been connected with you in the written exam also, in the written exam preparation, I think my score would be more than this. Can you share that journey कि वो पहला मॉक इंटरव्यू और फिर वो लास्ट मॉक इंटरव्यू, बीच में कितने सारे स्ट्रगल किए, क्या हार्ड वर्क किया आपने, कैसे खुद को ग्रो किया? बेसिकली यू आल्सो वर्क अबाउट योर इमेज मैनेजमेंट, एक पर्सनालिटी के ऊपर आपने काम किया। Yes, sir. When I saw your image of the interview, वो कोट और Yes, टाई sir. वाला, I was really very happy for that कि you really give value to the code of conduct। आप किस इवेंट में जा रहे हैं, उस Yes, sir. इवेंट के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। So that was Yes, the sir. best part that I have seen. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली इन द जो दो पिछले मेरे इंटरव्यू हुए उनमें मैं ट्रेनिंग नहीं ली, मतलब उस समय कोई थे ही नहीं कोच, आप ये मान लीजिए, इसीलिए शायद मुझे 2 बार असफलता मिली, नहीं तो मुझे दूसरे वाले प्रयास में सफलता मिल जानी चाहिए थी। आज की तारीख में ये बच्चे बहुत लकी हैं कि इनको कोचिंग्स मिल रही हैं रिटन एग्जाम की और इंटरव्यू की भी, उस समय नहीं थे सर, इसके लिए हमें मतलब निराशा हाथ लगी। लेकिन इस वाले इंटरव्यू में आपका तो सर मैं निशब्द हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, और मेरे अंदर जो कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी इंटरव्यू के टाइम पर, और जो मैंने पहला मॉक इंटरव्यू दिया उस समय मैं लड़खड़ा रहा था, मेरी आवाज़ भी वॉज नॉट वर्किंग वेल, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत मेहनत की, एंड द रिजल्ट इज बिफोर यू सर, सो द होल क्रेडिट गोज टू सर। आपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया? बिकॉज इन द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू आई टोल्ड यू सर आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ठीक ठाक नहीं है, यू विल हैव टू वर्क अपॉन इट। यस सर, यस सर। कैसे आपने काम किया इसमें? Sir, I improve myself day by day. Actually, I am an inter college. That's why no opportunity I got there to speak fluently, because the students of the government inter college are not very educated, and the atmosphere of education is not also proper there. But sir, I promise you, now I have a great platform, and now I have to fly, sir, in the sky, higher and higher, like just like an eagle. Eagle is the king of the sky. So no complaint, sir. Now, no complaint. I have a good platform, and I am to perform well. One day I am to prove myself better and better. सो आई होप कि जो प्लेटफॉर्म आपको अपनी लाइफ में नहीं मिला, लाइक यू सेड कि एक एनवायरनमेंट नहीं है अंग्रेजी बोलने का। Yes sir, yes sir. So now I hope that as an assistant professor you will be able to provide that platform to all the students in your Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. I will try. Actually, I have been a coach, sir, and I have given many coaching classes to many students, TGT and PGT, especially of UP, and about 11 students have been selected, and one of the student is a lecturer. He has been recently selected as a GIC lecturer,
and the newspaper cutting, Great. and you have seen, sir. Yes, yes, I have seen. Yes, 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 Guru sir. and Chela. यस सर, गुरु एंड चिला। सर बहुत अच्छा लगा मुझे, अखबार वाले ने इस तरह की न्यूज़ बनाई, मुझे अच्छा लगा कि चलिए Yes, और very good, very good. आगे भी काम Can you, करता रहूँगा। यस डॉक्टर सर। साहब, can you share वो live experience of the interview? कैसा रहा वो इलाहाबाद का experience? Illahaba, the interview was very good and the member was very good, but one of the expert sitting there, he interrupted me and he disturbed me, sir, again and again by calling cheap things, and I could not share here. So otherwise my interview would be far better, sir. Actually I have prepared well and you have trained me very well, but that man disturbed me again and again, and the disturbance was stopped by the member of the commission. When he saw him, he is a guruji and don't disturb him now again and again. This is the statement of the member, sir. Chairman. Member of the panel, member of the panel, sir. Yes, sir. Actually there were four experts were sitting there, and one of was not very good. He again and again disturbed me. Can you share some of the questions that were asked to you? Yes, sir. First of all, their question was, what are you doing? My answer is, I am in intermediate college. Then the member asked, honorable member asked, at what post? I said TGT. He said, why have you come here? For how many years have you been working there? So I said 17 years. How have you come here? Your salary will be will be less. Then I said, no sir, money does not matter. It has been my passion to be an assistant professor from the very beginning. And degree college is one of the highest platform where we can learn as well as teach more and more day by day. And then an expert sitting beside him, he asked me, what is the title of your thesis? Then I told my thesis name, literary value of non-fictional works of Sir B.S. Naipaul. And then he asked, what is the conclusion? I told them. But the another man sitting there, he said me, he was not very favorable, sir, and I could not share all these things before here, because the man played a negative role in my interview. Otherwise my interview would be very well. And next member asked me, what have you prepared? Then I said poetics. Then I told him the definition of tragedy, and many cross questions were asked there, such as what is magnitude, what is plot, complex plot, and peripecia and anagnosis, and what is catharsis. So all these questions I answered well. ये तो And सारे आपने prepare किए हुए थे पहले से. yes sir, yes, yes sir, and the topic was well prepared. And then next member asked me a figure of speech. He asked me, the camel is the shape of desert. I said this is metaphor. But the man sitting there, he asked me, आपने ये किसी दूसरे लड़के से पूछ के आए होगे? Sir, I was shocked, sir. When this, उस आदमी ने ये कहा कि भाई आप ये किसी से पूछा होगा कि ये कौन सा अलंकार है. I think this should not be in the interview, sir. Yes. Then the member of the panel interrupted the man and said, he is a Guruji and teaching for 17 years. इतना तो ये जानते ही होंगे. But sir, I said, I made no reply to him, sir. Okay, so tell me those names. Starting from जब से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की है, तब से लेकर के आज तक वो सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स या फैमिली मेंबर्स जिन्होंने भी कुछ रोल प्ले किया है आपके लाइफ में, क्या आप उनका नाम लेंगे? यस सर, बिल्कुल लेंगे सर. सबसे पहले तो मेरी माँ, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया मुझे शिक्षित करने में और यहाँ तक पहुँचाने में, और मैं उनके प्रति बेहद ऋणी हूँ और हमेशा अपना सिग्नेचर उनके नाम से ही करता हूँ सर.
मैं ये सोचता हूँ कि आज जो कुछ मैं हूँ वो अपनी माँ की वजह से हूँ। सेकेंडली, डॉक्टर एस सिंह सर, जिन्होंने मुझे बीए से लेकर एमए तक पढ़ाया और जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया, और एमए करने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट में रखा प्राइवेट टीचर के रूप में, और वहाँ पर मैंने करीब 1.5 ईयर्स मैंने सेवाएं दी। उसके बाद मेरी जॉब लग गई। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सर का भी अच्छा योगदान है। उसके बाद मतलब मेरे एस के सर की सीरीज बहुत अच्छी रही, और मैं बहुत अनलकी रहा कि मुझे हमारे ऑनरेबल डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी मुझे बहुत देर से मिल पाए और इंटरव्यू मिले। काश, यस यस सर, मैं आई ऑनेस्टली से सर, यदि आप मुझे काश पहले मिल जाते रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा होता सर, और मैं मतलब जनरल में सिलेक्ट हो जाता, आई थिंक विद इन 20 और विद इन 10। और मेरी लाइफ में सर मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और ये कहा कि आप अपनी उड़ान भरो, अपने सपने को पूरा करो। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें सपना ज़रूर देखना चाहिए, और सपने के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बाधाएं बहुत आती हैं, हमें विचलित नहीं होना है, और लाइफ में कभी सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि अक्सर कर लोग टूट जाते हैं। जो मेरी उम्र है 40-42 साल की, इस उम्र पर तो लोग अक्सर कर रिटायर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई अब नहीं है, अब तो पढ़ाई का काम खत्म है, ये नए लड़कों का काम है। तो जो मुझे होना बहुत था हो खुशी, गया। हाँ हो गया, होना था सो हो गया। और सर मैं तो आप जानते ही हैं सर, मेरी अच्छी खासी इनकम है और मुझे भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक पैशन था मुझे टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको पूरा करने की जिद जो थी, उसी जिद की वजह से आज का दिन आ पाया और आपके सामने वेरी जी सर। इंस्पिरेशनल मैन यू आर। एंड अभी जो नया एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, मेनी ये स्टूडेंट्स आर देयर हु आर प्रिपेयरिंग इवन विथ मी एंड इवन दे आर प्रिपेयरिंग आउटसाइड, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें इंग्लिश के साथ साथ अपने जीएस वाले पोर्शन में भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो स्कोर है वो यदि जीएस वाले पोर्शन में 25 प्लस नहीं होगा जब तक, तब तक वो मतलब अच्छी रैंक में नहीं आ पाएंगे। मिनिमम स्कोर जो है जीएस में 25 और इंग्लिश में मिनिमम 50, यानी कुल मिलाकर के 75 प्लस होगा तो वो कैंडिडेट, उसको कोई रोक नहीं सकता सर, चाहे इंटरव्यू उसका कितना ही खराब हो, कोई नहीं रोक पाएगा। तो जितने भी हैं मैं इनको कहूँगा कि मेहनत से काम लें, ऊपरी स्तर पर न पढ़ें, और मतलब डीप स्टडी करें और कंसेप्ट को समझें, क्योंकि केवल रटी हुई चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं। आप रटी हुई चीज़ें पढ़ेंगे तो सिर्फ आधा स्कोर आप कवर कर लेंगे, 50%, यानी 50 तक तो एवरेज बच्चे ले आते हैं, लेकिन 50 से ऊपर की जो लड़ाई है 65 तक, उसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, और 65 से 75 की जो लड़ाई है उसके लिए आपको और ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, डबल। तो अपने आप को एक टारगेट सेट कर लें कि हमें इतने क्वेश्चन से 75 प्लस 75 से और 80 के बीच में हमें अपना स्कोर करना है। और इस बार तो चूंकि सीटें भी बहुत कम हैं, और इस बार अब बच्चों को ये ध्यान, कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब सारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। अब 46 और 47 वाला जमाना नहीं है, जब लोग अब यस, जितना, यस बिल्कुल ऑनेस्टली सर मैं कह रहा हूँ, वेरी राइट, सारे वेरी राइट। सारे कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, और अब लड़ाई 75 और 80 के ऊपर ही होगी सर। इतना स्कोर है तो बात बनेगी, और जगह भी कम है तो कंपटीशन टफ हो जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को कि वो अपनी तैयारी अच्छे से करें, और पूरे और कंसेप्ट को समझें, क्योंकि कंसेप्ट को जब तक नहीं समझेंगे तो इंटरव्यू प्रॉब्लम आएगी सर। हर चीज़ को रटे नहीं, उसी कंसेप्ट को समझें विद एग्जाम्पल। अक्सर कर एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ें हैं सर, और आपके दिशा निर्देशन जो भी पढ़ रहे हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं, मुझे पक्का विश्वास है सर, उसमें से अगर 2-4 की मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने भी ईमानदारी से अगर आपको पूरी तरीके से पढ़ लिया और तैयार कर लिया आपका दिया हुआ मटेरियल, दे विल बी डेफिनेटली सिलेक्टेड। Thank you so much, Dr. Saab, for your blind trust in me since beginning. यस सर, Because यस yes, because what I remember, ना हम आपको जानते थे ना आप हमें जानते थे, and believing someone so blindly, it's really, really, you are a likely man, and I सर, really दिस इज नॉट द ब्लाइंड फेथ सर, दिस इज द एक्चुअल फेथ, and this is the reality sir. I have seen you the best teacher in you during the preparation of interview. So उनको पूरी तरह से तैयारी करें, और आप जितना मटेरियल दे रहे हैं उसको कंसेप्ट तैयार करें, दे विल बी फाइनली सिलेक्टेड सर।
and your result will be 95 plus, sir. I think. Great. Thank you for your wishes and best compliments, डॉक्टर साहब. Yes, And sir. I wish कि आप अपने लाइफ में अभी जो आपने शुरुआत की है इसको और आगे लेके जाएं. Do बिल्कुल not सर, stop. बिल्कुल. As I can see, आप कभी stoppable है नहीं. Nobody can stop you. So touch all the heights of your success जितना हो सकता है. And I want to see you somewhere at the top of the management in the colleges and the universities. ओके सर, अब सर मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है. अब आप सर मेरी Yes. एक्टिंग को देखिएगा सर. अब समय बताएगा Yes. कि हाँ, अब मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है लाइफ से कि मुझे न कोई घुटन है कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला. अच्छा कॉलेज भी मिलने जा रहा है, हालांकि ये फाइनल नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझसे जो ऊपर जो 3 लड़के हैं वो पूर्वांचल साइड के हैं, उनसे मेरी बात हो गई है, तो वो आगरा में इंटरेस्टेड नहीं है. अगर यदि होंगे तो आगरा नहीं मिलेगा, दूसरा कॉलेज मिल जाएगा. अभी फाइनल नहीं है, लेकिन पूरे चांसेज हैं. Sure. और जहाँ Also भी now सर. I can see the height of falcon inside you. यस सर, यस 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 सर. फाल्कन सर. Great, great. Okay, so thank you so much, Dr. Saab, for this wonderful थैंक. interaction. और मैं ओके ये सर. विश करता हूँ कि वो सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, they will highly. यस सर, यस सर. यस सर सर. थैंक यू सर, थैंक यू.